देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की स्टैम्पीड के चलते भगदड़ मचने के कारण जो घटना वहाँ घटी और लोगों की जानें गई, बहुत अनगिनत लोग घायल हुए, ये अत्यंत दुखदायी घटना है। और मुझे लगता है कि पूरे देश की आत्मा को झंझोड़ के रख दिया इस पूरी घटना ने। मैं सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे लोग जिनकी जानें चली गईं इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में, उनके परिवारों को शक्ति प्रदान करें कि वे इस दुख को सहन कर सकें, और जो लोग घायल हुए हैं उनके जल्द से जल्द फिर से स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं और प्रभु के श्री चरणों में अरदास करता हूं। ये पूरी घटना ये दिखाती है कि हमारा जो भारतीय रेल है, जो रेल विभाग है, वो किस स्तर की बद इंतजामी और लापरवाही देश के नागरिकों को सौंप रहा है, दे रहा है, किस प्रकार की लापरवाह सुविधा लोगों को दी जा रही है। मैंने 11 फरवरी को अभी जो बजट सत्र पार्लियामेंट का चल रहा है उसमें इस विषय पर बात रखते हुए ये कहा था कि हमारे भारतीय रेल की स्थिति कुछ इस प्रकार हो गई है कि जनता को आलू की बोरियों की तरह ट्रेन में ठूस के लाद के भेजा जाता है, और कहीं ट्रेन में शौचालय में भी अगर बैठने की जगह, आपको खड़े होने की जगह मिल जाती है तो यात्री अपने आप को भाग्यशाली समझता है। और हमारे इस देश का भोला भाला आदमी को भेड़ बकरियों की तरह ही लाद कर रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन के डब्बों में चढ़ाया जाता है। और ये पूरी एक अव्यवस्था और लापरवाही जो बन चुकी है, हर रेलवे स्टेशन पर इसी प्रकार के कुछ दृश्य आपको नजर आएंगे। ये बहुत चिंताजनक है। और खास तौर पे महाकुंभ से संबंधित विषय पे बात करते हुए मैंने संसद भवन में बात रखी थी कि प्रयागराज और उसके आसपास के कई सारे रेलवे स्टेशंस को क्राउड मैनेजमेंट ना करने की वजह से, ना ठीक से होने की वजह से भारतीय रेल को बंद कर देना पड़ा। तो अगर महाकुंभ जैसे महापर्व पर भी हमारी रेल व्यवस्था की ये स्थिति रहेगी, इस प्रकार के हालात रहेंगे, तो कैसे कोई यात्री अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। और बड़ी बात यह है कि इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि पिछले सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि न जाने अनगिनत रेल एक्सीडेंट्स देश भर में देखने को मिलते हैं। औसतन हर महीने एक नई रेल दुर्घटना की खबर देशवासियों को मिलती है। तो उसमें कितनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जाती है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी जाती है, किसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है इस लापरवाही और बद इंतजामी के चलते। तो इन सारे विषयों पर मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। और जो ये घटना घटी है, परमात्मा उन परिवारों को शक्ति दे, साहस दे, और सरकार कम से कम अब ये सुनिश्चित करे कि इस प्रकार की कोई भी घटना देश भर में ना घटे। हाँ सर, 10 लाख के कंपनसेशन देने की बात की गई है। वहीं बाद में ये भी चीज़ कही गई कि जब ये घटना हो गई उसके बाद 4 स्पेशल ट्रेनें लगाई गई क्राउड कंट्रोल के लिए। तो ये कहें टू लिटिल टू लेट। देखिए, जब एक बार घटना घट गई और इतने सारे श्रद्धालु जो हमारे इस महापर्व में, महाकुंभ में हिस्सा लेने जा रहे थे, उनके साथ ये दुर्घटना घटी, उसके बाद अगर आप कोई इंतजामात करते हैं, 4 ट्रेन ज्यादा लगा देते हैं, 2 ट्रेन किसी और रूट से डाइवर्ट कर उसे प्रयागराज के रूट पे लगा देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। बात तो यह है कि उन भोले भाले मासूम श्रद्धालुओं की जानें चली गई। वो भोले भाले मासूम श्रद्धालु वहां घायल हो गए। और क्यों हुए? क्या उनकी कोई गलती थी? क्या उन श्रद्धालुओं ने कोई पाप किए थे? क्या उनसे कोई गलती, क्या उनसे कोई लापरवाही हो गई? ये तो सीधे सीधे भारतीय रेल की लापरवाही और बद इंतजामी के चलते हुआ है, जो बेहद दुखदायी है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने 11 फरवरी को इस विषय को संसद भवन के भीतर अपने बजट जो सत्र चल रहा था उसमें एक भाषण देते समय इसको रेखांकित भी किया था कि भारतीय रेल की जो अव्यवस्था है उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाए, सरकार उस पर फोकस करते हुए अपने जो व्यवस्था उसमें सुधार करे। इस प्रकार की लापरवाही चलती रहेगी तो न जाने और कितने मासूम लोगों की जानें जा सकती हैं इसी प्रकार के इंसिडेंट्स के चलते। Oh, you're referring to my article. Look, as far as I'm concerned, the article speaks for itself. You're most welcome to read the article. It's there in black and white. It is not an overall good conduct certificate to the present government. It is not
praising the overall economy. I have pointed out many times there are many problems in the Kerala economy, unfortunately, including high unemployment, massive out-migration from our state, youth leaving in large numbers, crisis in the agricultural sector, crisis in the fisheries sector. There are a lot of problems, massive public debt. The state is one of the highest indebted states. On top of that, the PSUs are all loss-making. There are lots of problems. So no way, but this was an article about one subject alone, and that is startup entrepreneurship, where, according to the Global Startup Ecosystem Report, Kerala has done exceptionally well. It seems crazy not to acknowledge that, because this is one of the things I've been calling for the last 15, 16 years, that the way to address our problem is more investment, more interest, more involvement of the business community in our state, improving ease of doing business. Now, the state is doing some of that. Why should I not acknowledge it? Do you think the Congress leaders are isolating you from Kerala politics? Look, don't ask me. You can ask them what their motivations are, but I would urge them just read the article. Once they've read the article, they'll realize that some of their concerns are misplaced. Sir, about Delhi Stampede yesterday night, children, including women, 18 injured in Inkhabar. Very sad. Very, very sad situation. I think, honestly, these are the kinds of human losses for which there is absolutely no compensation possible. We've seen an unknown number of deaths in the Kumbh Mela itself. Today's news about the deaths on the Delhi railway station are also extremely upsetting. Whenever we have this kind of uncontrolled number of crowds and people in circumstances like this, it seems to me we are inviting this kind of problem. I think more stringent measures will have to be put in place, because safeguarding human life has to be the number one priority. Of course, we're all distressed. It's a very, very sad situation. So, one thing, even today, US military aircraft with 116 illegal Indian migrants landed in Punjab. Punjab Chief Minister Bhagat Singh Man has said that BJP-led central government is deliberately trying to defame Punjab by choosing Amritsar as a landing site. No, I think on these matters, they normally choose the destination that is most convenient for a majority of the people on these flights, and I believe that the largest single group was from Punjab and Haryana, therefore this airport. But I'm not the one to explain that. The others will have to explain it. I'm not happy about the Americans choosing to send a military aircraft. I have not seen any report as to whether these returnees were also handcuffed or shackled. If they were, we should definitely protest. When the Revanth Reddy, Telangana CM says Prime Minister Narendra Modi Garu is often referred as to a BC, backward caste, but Modi Garu is not a BC, he is legally converted to BC. Do you want to comment on that? No, I think there was an issue about at what point the Gujarat state government had classified his particular caste as a backward caste. You know, in our country, many states have different classifications, and it is possible for the same caste to be backward in one state and not backward in another state. I think that's what he was referring to. One last question is about Raghav Chadha Instagram exposed. He said, Mr. Tharoor, you know very well that India have only 400 startups in 2014. In the country now it is 1,40,000. So this is a credit to Narendra Modi. Did you say that again? I don't remember seeing that, and I don't remember saying anything like that. I have certainly praised, if you listen to my speech at the Singapore FinTech Festival, I have praised the Indian startup change and culture, the fact that we have 140 unicorns. When I was in Karnataka, where there is a Congress government, I praised the fact that startups are flourishing there, and that 45 of the 110 unicorns in the country are actually in Karnataka, based in Bangalore. So there's tremendous progress being made nationally and in specific states. If Kerala is also a state that is prospering in the startup ecosystem, let us welcome it. We need to start more businesses, there's no doubt about that. Karnataka has done it well. Kerala may be doing it well, according to the disputed figures that I have been quoting in my article. And at the same time, India, we need India to prosper. All Indians want to see more businesses, more jobs, and more prosperity. I'm asking, do you think this politics is the main problem of these startups? To be honest, I think that sometimes some issues should be beyond politics. I've often argued that development is an issue and national security is an issue, foreign policy is an issue, where we need to think beyond our political narrow party interests and think in terms of national interests. I have tried to do that. It's not always a welcome approach in our present very charged up political atmosphere. Do you think Kerala media is doing much more controversy on this issue?
Look, as far as this particular article is concerned, I'm mystified and somewhat bemused by the extent to which the Kerala media has made this into such a major issue. It is to me a very, I mean, I have said these kinds of things for many years now. I have made speeches all over the state about development and progress of Kerala. I have spelled out what is needed. This is an example of what is needed. So I am totally mystified that this should suddenly become such an issue, but I think it's also partially to do with the reaction of some who may not have read the full article.